Hello student, good morning all. Beta, we have already completed at chapter number 1 and 2. Our copy work is also completed, book work is also completed, right? So what we have to do now, we have to revise our syllabus. Okay, we have already discussed our chapter. I have explained first and second, but we have to revise now. So I am taking the first chapter, your first chapter, some topics which I have not discussed earlier on the basis of diagrams. Okay, so you can easily understand with the help of diagrams. This is easily to understand. Okay, let's start. First of all, what is network architecture? Earlier we have discussed communication, data communication networking, computer network, advantages of computer network and major components of a computer network. So now we have to do what? Discuss नेटवर्क आर्किटेक्चर. बेटा कैसे आपका नेटवर्क का आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया गया है, किस बेस पे आपको नेटवर्क प्रोवाइड होता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर, हाउ वी कैन ट्रांसफर द डेटा on the behalf of network architecture. Okay, so network architecture is represent the complete framework of a computer network. मीन्स आपका कंप्लीट नेटवर्क जो है वो किस पे डिपेंड है, किस कैसे उसकी डिजाइनिंग हुई है, इट्स डिपेंड ऑन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सॉरी नेटवर्क आर्किटेक्चर. ओके, सो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स आर peer to peer network and client server network. Here's two types. Peer to peer means person to person, or you can say the system to system, workstation to workstation. Client server means the all clients are depend on server. So network provided by the server to the client. Okay, spread all the information, all the clients by the server. So it is based on two forms. First one is peer to peer network. बेटा इसके अंदर होता क्या? In peer to peer network all the computers are connected to each other called peers. इनको क्या बोलते हैं जब आपस में कनेक्ट है ये सारे कंप्यूटर्स? देखो ये सिस्टम आपका दिस वन इज कनेक्ट टू दिस, this and this also, this also. Okay, means every system is connect to each other. वो आप किसी पे भी डाटा ट्रांसफर करना है, आपको डेटा ट्रांसफर करना है, यू कैन easily transfer. No disturbance in between will occur. Okay, so in data is shared directly between the computers, and this type of architecture is good for small organization where users are located in same area. आपके जो users हैं वो same area पे आपके located होते हैं and we can easily transfer the data. They are easy to set up and are less expensive. इसमें कुछ भी हमें mediator नहीं लगाना होता, translator नहीं लगाना होता. We can transfer the data each other easily, so it is very less expensive. Okay, we can say in peer-to-peer network something like these. Next is client-server architecture. What is client-server architecture? As we have discussed, all the clients are depend on the single server. In client-server architecture, computers are depend on a centralized computer. Means centralized computer बोल सकते हो आप उसको, या फिर आप उसको server बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो. भाई सर्वर भी क्या होता है? कंप्यूटर ही होता है जो आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर. एंड द सेंट्रलाइज कंप्यूटर एक्ट्स अ हब. वो कैसे एक्ट करता है? हब की तरह एक्ट करता है. वेयर एज ऑल द कनेक्टेड कंप्यूटर्स टू द सर्वर आर कॉल्ड क्लाइंट. इन सबको हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट. द सर्वर इज द हार्ट ऑफ नेटवर्क. हम इसको हार्ट बोलेंगे बिकॉज ऑल नेटवर्क इज डिपेंड ऑन सिंगल सर्वर. सो दिस इज कॉल्ड हार्ट. कंप्लीट नेटवर्क इज डिपेंड ऑन सर्वर. सो इफ सर्वर फेल, अगर हमारा सर्वर फेल हो जाता है तो पूरे क्लाइंट्स पर आपका इसका इफेक्ट पड़ता है, सारा कंप्लीट नेटवर्क गोज डाउन. ओके, सो दिस इज कॉल्ड client server architecture. The all clients are depend on single server. Okay, here is printer, BlackBerry and backup unit also. Like
with connected to the server. Next is here types of computer network. Beta, we have 4 types of computer network, that is LAN, MAN, WAN and PAN. What is LAN, MAN, WAN, PAN? We will discuss here. First of all, PAN. This is personal area network. A personal area network, that is PAN, is a computer network used for data transmission amongst devices such as computers, telephone, tablet, personal digital assistant. मीन्स इन सब के बीच में जब नेटवर्क प्रोवाइड होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं बेटा, आपने देखा भी होगा अपने घर पर भी एक सिस्टम से अपना माउस तो कनेक्ट होता ही होता है। सिस्टम से माउस कनेक्ट करने के लिए इसमें भी तो नेटवर्क की नीड होती है। आपने देखा होगा हम एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, इंटरनल माउस तो अटैच होता है लैपटॉप में, बट एक्सटर्नल माउस को यूज़ करने के लिए व्हाट वी नीड, वी हैव टू नीड attach some device which we have to connect with your laptop. After that you can use your wireless mouse also, right? And this is called network, providing the network, or we can say the transferring the data. We can attach the printer also, mobile phones, PDA, microphones and another laptop also. Okay, so these types of network is called PAN. Next is here you can say PAN network is also depend on this diagram. This is internet, home gateway, network camera, laptop, telephone, web phone, TV and set-top box, scanner, camera, printer, desktop. These all are connected to each other and provide getting the internet. This is called PAN network. Okay, because the area is very small. Next is we will discuss here local area network, or we can say LAN. Here is the distance is some large than PAN network. Okay, in LAN, what is the design for small areas such as offices or group of offices, buildings, school, college, campus, etc. और स्मॉल LAN कैन बी मिनिमम 2 कंप्यूटर्स। सबसे छोटा LAN क्या बनता है आपका, 2 कंप्यूटर्स को आप अगर अटैच कर रहे हो, इज कॉल्ड द LAN नेटवर्क। ओके, एंड LANs आर यूज्ड वाइडली एज दे आर यूज्ड इजी टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन। आप इसको इजीली एस्टैब्लिश कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। LANs enables to communicate within a range of 1 kilometer। 1 किलोमीटर के अंदर जो भी आपका नेटवर्क प्रोवाइड हो रहा है, इज कॉल्ड द LAN एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट इज हियर you can say LAN is providing here computers, these all are connected to single cable, and LAN network is provided by file server, mail server, print server, and the printer is all attached to the these server. Okay, these are also called LAN. Beta, by the help of diagrams you will be able to understand easily. Okay, so please focus on the topics with diagram also. Next is here metropolitan area network, or you can say MAN. In this, LAN is established over there and all LANs are connected to the MAN. Means in this area the MAN can cover an area from few miles to 10 miles. कुछ miles से 10 miles तक इसमें आप cover करते हो. MAN often used connect several LANs from a larger network. MANs extremely efficiently provide a fast communication with the range of 10 km. In LAN, 1 km personal area, single building you can say, or single room also. PAN is established over there. LAN is 1 km, MAN is 10 km. Okay, and this is called metropolitan area network. Next is WAN, means wide area network. A wide area network connects the computers on a large scale. Geographically, WAN is combination of multiple LANs. जहाँ आपके LANs हैं उन सबको connect करने का work कौन करता है, WAN. Okay, LAN and MANs. These ensures communication between two users sitting on a 2 different location. जो आपके 2 users हैं या 3 users हैं जो 3 different location पर बैठे हुए हैं, sitting हैं, and you can say the banking system also. One is person is London, the second is America, and the third one is India. They all are connected to each other and they can transfer the money in all over the area easily. Okay,
So this is called wide area network. You can understand by this example also network architecture. The lower tier is called LAN, middle tier is called MAN, and the higher tier is called WAN. In lower tier सेंसर नेटवर्क ब्लूटूथ ZigBee बेटा एक तरह से ये आपके डिवाइस में अटैच होता है. डिवाइस में डेटा को सेंसर्स लगे होते हैं जिसकी स्क्रीन से अटैच करने के लिए होते हैं. स्क्रीन की लाइट कम ज़्यादा उस सब के लिए ZigBee यूज़ होता है. एंड इज अ पेशेंट वियरेबल द सेंसर बेल्ट. आपके ये जो इस तरह का नेटवर्क प्रोवाइड करता है इज कॉल्ड द लोअर टायर और वी कैन से लैन नेटवर्क. These all are connected to ad hoc network. Ad hoc is where that all systems are connected to each other and devices में आपके जब network provide किया जाता है is called ad hoc. Middle tier GPRS system मिल रहा है और Wi-Fi मिल रहा है but वो किसकी help से मिल रहा है? This is with the help of WAN. Okay. So example of network architecture is here. The WAN is here application server, remote station and internet. रिमोट स्टेशन इज द हेल्पिंग फॉर अस वैन एरिया नेटवर्क. मीन्स इसको जो नेटवर्क प्रोवाइड हो रहा है वैन एरिया के बिहाफ पर हो रहा है. सो दीज आर कॉल्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर. गॉट इट? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड मोर. नेक्स्ट इज हियर टोपोलॉजीज. बेटा यू हैव 6 टाइप ऑफ टोपोलॉजी वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास. हाइब्रिड, बस, स्टार, रिंग, मैश एंड ट्री. You can understand by this diagram also easily. Hybrid in the form of this or the combination of 2 or more topologies we can say. Bus topologies depend on single cable. Ring in the form of ring, star in the form of client server. Meshes all are connected to each other and trees depend on the hybrid form. So all these topologies are depend on this diagram. Or you can say easily understand all the topology by these diagrams. Okay. First one is a bus topology. Let me discuss one by one. Beta discuss these things. I have discussed these things because you can understand more by this diagram. Okay. Central cable is here and device 1, 2, 3, 4, 5 all are connected to single cable. This single cable is called central cable. All devices are connected to central cable. So this is called bus topology. Next one is here ring topology. All the systems are in the form of ring. So we can say the ring in the form of ring all systems are connected. So it is called ring topology. They can transfer the data to each other, but if a single node 6 or we can say the computer 6 want to transfer the data node 2, they have to reach not directly, they have to reach firstly 5, 4, 3, 2. After then got it the data. Okay. Next is star topology in the form of client server. Central controller is over there. The all hosts are connected to central controller. So they can transfer the data by the help of central controller. If first one is want to transfer the data to fourth, firstly transfer the data central controller, after that to the host 4. Okay. This is called star topology. Next one is here mesh topology. Means all the systems connected to each other and they can transfer the data anyone. Computer this one is transfer the data this all over. They are free from all the types of connectivity. कहीं भी ये डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड मैश टोपोलॉजी. दैट्स व्हाई द नेम इज मैश टोपोलॉजी. ओके. नेक्स्ट वन इज हियर ट्री टोपोलॉजी. बेटा इन ट्री टोपोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दीज थिंग्स. हियर मस्ट बी द 3 लेवल्स शुड बी देयर. यहाँ पर 3 लेवल्स होने मस्ट हैं तभी आपकी ट्री टोपोलॉजी कंप्लीट होती है. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. Okay, first server transfer the data second, 2 servers and 2 transfer the data again 3 and again 3 is transfer the data again 3. Okay, आपके 3 levels यहाँ complete होते हैं. So in this form we can say the hierarchical topology also, and this type of topology called tree topology. One node is defined as a root node and all the other nodes are connected to it. It is also known as
hierarchical. Okay, hierarchical topology or hierarchical structure. To implement tree topology, you need to minimum 3 levels of hierarchy. This ideal if workstation is located in the group. The topology is ideal if workstation are located in the group. अगर workstation कोई भी आपका है आपके सिस्टम के अंदर, तो आपकी जो ट्री टोपोलॉजी है वो आइडियल होगी, मीन्स उससे कोई वर्क नहीं दिया जाएगा. दिस इज कॉल्ड ट्री टोपोलॉजी. नेक्स्ट वन इज योर हाइब्रिड. बेटा हाइब्रिड के अंदर क्या होता है, आपकी एक या एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज जब भी कंबाइंड होती हैं इज कॉल्ड हाइब्रिड. देखो यहाँ पर कौन सी टोपोलॉजी है, हियर इज विच वन, here is which one, this is called star topology in the form of star. This is called ring topology and this is called bus topology, but they are connected to the single cable, so it is called hybrid topology. They all are connected to each other, they can transfer their data all over the network. This is called hybrid topology. So all topologies are there. Let me discuss with different type of example. First one is here, you can see here data center, means with the help of this line transferring the data. Here is different topologies are there. Here is the bus topology, you can see this is depend on single cable. Here is also bus topology, here is also bus, and here is different topology. This is data center line and the manager, finance and monitor, they all are connected to each other with the single cable. Here is two databases which is connected to file server, and www server is here, communicate server and communicate again to second server. Okay, these all are connected to single cable, but these servers are also connected to here, this is router which provide the different types of network to all over the system, or you can say workstation. Switch provide the network, fireware, router, and again second router. Internet is provided by communicate server. Switches over there, record, finance and other, these all are client center, and data center is over there, the communicate database server, communicate clients, जो communicate करेगा client से, रिकॉर्ड फाइनेंस. इस तरीके से जो आपका सिस्टम बनता है, द कंप्यूटर्स नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय द हेल्प ऑफ टोपोलॉजीज. मीन्स जो आपके सिस्टम्स होते हैं बेटा, वो जिस भी टोपोलॉजी के अंदर बैंड किए जाते हैं, ये कैसे आप कह सकते हैं, जिस भी टोपोलॉजी के थ्रू वहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है, एंड द स्ट्रक्चर इज फॉर्म एज अ टोपोलॉजी एंड दे ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर इज कॉल्ड द टोपोलॉजी. मतलब आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, तो उन्हें किसी ना किसी फॉर्म में अटैच किया जाता है, तो उन्हें इस बेसिस पे अटैच किया जाता है कि जहाँ जैसी नीड होती है. मीन्स अगर एक सर्वर और बहुत सारे क्लाइंट्स को एक लाइन में मर्ज कर दिया जाए और वहाँ से डेटा को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी. अगर हमें चाहिए कि हमें एक सर्वर है और हमें बहुत सारे, मीन्स एक ऐसे पर्सन को बिठा दिया जाए जिसकी नीड सबको है, समझ रहे हो आप मेरी बात, कि एक सर्वर हमने बना दिया जाए जिसकी नीड सारे क्लाइंट्स को है, तो वो सब सारे क्लाइंट्स को डेटा ट्रांसफर कर सकता है. दिस इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर. यू कैन सी द स्टार टोपोलॉजी शुड बी देयर. So these types of topologies, when we connect to each other, is called the topologies connected. Connection of topologies. This is client center. This is client center. Okay. I hope you all are understand more by this revision session. So discuss these things. We will discuss these things in next class. If there is a problem, you can call me in between 4 to 6 p.m. Okay. Thank you.